हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स लर्निंग क्लासरूम स्टाइल। मैं शिखर, आप सबको मेरा जय श्री श्याम। टुडे सब्जेक्ट इज साइंस एंड वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज adaptation in animals. We had studied some 3 to 4 chapters back adaptation in plants, and in that chapter we had learned how different plants grow in different regions where the climatic conditions are not same. How do the plant stays that are grown underwater, how do they breathe, how do the plants make their food in different climatic conditions. So there were many characteristics or features that we had discussed about the plants that grows in different environment or across the globe. Similarly, we will in this particular topic we will know about the animals. As we all know that our earth has different kinds of places. Like some places are very hot, some places are very cold, some places experience a moderate temperature, means it's neither too hot nor too cold. There are places that's very much green, like hilly areas, then oceans. So there are many such reasons, and we have also noticed that the animals that live in these particular regions differ from each other in terms of what? In terms of their look. Have you ever wondered, my dear students, why these elephants, these elephants, if we look at the picture here, they have very big ears. These giraffe, they have very long neck. The polar bear's body is is kind of, which is covered with a fur, if you see, and their these legs, which has the this down part, is a little bit more thick. Then these lions, their paws are very sharp. Their this head looks, their teeth are very sharp. If you will notice, these penguins, again, they have thick fur on their body. So that's why what has made this animal be so different from each other? That's because, my dear students, these animals are found in different places, in different region, where the climatic conditions are not same. As my dear students, plants, they cannot move from one place to another, but animals move from one place to another in search of food, in search of shelter, and in search of water, so that they can survive. Yes, so that they can survive in that particular area. So if the climatic conditions are too adverse for them to survive, then their body has certain characteristics that make them live in that particular area, in that particular environment. And these changes that the animals go through is not something that happens overnight. It's a very slow, very gradual process, and slowly their bodies have that characteristic, have those features that allow them to survive in the extreme or the extreme conditions. Yes, so as we all know that the natural place, the natural environment where these plants and animals are found is called habitat. The same thing we had discussed when we had studied adaptation in plants. But sometimes the environment is so harsh that it becomes difficult for an organism to survive. In such cases, they adapt to changes. They adapt to they adapt or change itself according to the surroundings, and that change that change that they get in is known as adaptation. So if you will notice, my dear students, these giraffes here, they have long neck. Why do they have long neck? That's because giraffes, they mostly eat leaves. So they eat leaves of the trees that's pretty much very tall, and
if their neck are not tall, then they will not be able to eat that particular leaves, those leaves that they need to survive. So the main food habit of these giraffes are leaves, and that's where their necks are so long, that their necks are also long, and even their tongues are also long, so that they can eat the leaves of the tall trees. Now polar bear, my dear students, polar bear, they have, their body is a kind of which looks most like a snow. They have thick fur on their body. Why is it that? That's because they are generally found on regions where it's extreme cold. It's extreme cold. Similar to polar bear, we also have noticed that these penguins are also found in places where it's very cold, and that's where their body also have fur which is thick, and that allows them to live in that extreme cold conditions. Now my dear student, these camels, we have always, we always know that these camels are found where? So these camels are found in the desert area. Why is that? So that only animals, like very few animals we would have noticed in desert area. So what is that makes these camels survive in the desert area? So they have the thick skin. So if we will notice, these camels, they have a thick skin, and their skin does not have much of hair that protect them from heat. Yes, and then these camels, they have these humps here that stores fat, and they can travel for many days without eating anything. And also, if you will notice, the feet of these camels are of like a thick pad that allows them to walk on the sand. Now if you will see, my dear students, these monkeys generally, they are found where? They are found on trees. They generally swing on trees, they stays on trees. So what is that? So their body is made accordingly. They have developed those characteristics that allow them to stay in the trees. Similarly, these crocodiles, my dear students, where are they found? So these crocodiles, we can see on land and water. Yes, they are land, and they cannot basically survive in the conditions where it's too hot. We have not seen, because they generally are found on the area which is basically swampy area, which is has water most of the time. So therefore these crocodiles are not animals which can survive in a very, very hot conditions. Now about elephants, my dear student, these elephants, if we notice that these elephants have this big ears. So have you ever wondered why do these elephants have big ears? So that's because it is said to believe that many these elephants' ears have many blood vessels that regulate their body, that help them to regulate their body in hot climatic conditions. So therefore here, my dear students, there are so many pictures of different animals, and these animals are found in different places, and their look, their habitat, basically what they eat and everything differs from each other. Yes, so we will discuss about this in details, about these animals, which areas, which places, which animal is found, how is their body structure, what allows them to stay in that particular climatic conditions, and what do they eat. So there are many things that we will come across and we learn about these animals. So let's get started. And therefore I've also made some good to know facts about these animals that I will quickly show you, and we'll read through it. Let's get started. So here, if you have noticed, these cheetahs cannot survive in the conditions wherein it's extreme hot. It has to be a little moderate kind of temperature, but they're very light weighted. So why are they very light weighted? So that they can catch
they are the predators basically who catch, who kill other animal to for their survival. And they have long legs. So what are camels? So like camels, I told, they have humps for storing fat, which can be converted to energy and water. They have long eyelashes to protect from sand, and the ability to go long periods without water, because whatever fat they store in their hump, they use that. Now polar bears, what they have thick fur and a layer of fat for insulation, larger paws. So they have, these big, they have this very big paws for swimming and walking on snow, because since they are found on regions where it's extreme cold, so therefore they have this very larger insulation, larger paws, and a white coat for camouflage. So what is camouflage basically? So camouflage is the color of the animal is similar to the surrounding color. So like since these polar bear are found in places where it's extreme cold, so in the entire environment, the surrounding is white in color. So these polar bears are also generally white in color, so that is called camouflage. We will in this chapter read more about this camouflage, so don't worry my dear students, I'll explain each and everything. Then giraffes have long necks for reaching high vegetation and long tongues for grasping leaves. And then what about the elephants? Elephants have large ears with many blood vessels that help them regulate body temperature in hot climate. So all these changes, my dear students, in the animals, we have seen the animals like this, but then these changes in animals have taken them many years to get these developed, and that's why now they are found in specific regions, specific places, because their body, they have adapted to those particular climatic conditions. And that is what we are gonna discuss or study in our chapter adaptation in plants. So let's get started. Habitat, as I told, the natural environment or place where an animal or plant live. मतलब जहाँ पे भी, जो भी जगह पे, जो भी नेचुरल जगह पे इन्वायरमेंट पे वो प्लांट्स और एनिमल्स लिव करते हैं, उसे हम कहते हैं हैबिटेट. बट however the outside environment is so harsh that it becomes difficult for an organism to survive. और उन सर्वाइवल के लिए वो अपने अंदर जो भी चेंजेस लाते हैं उन्हें हम एडेप्टेशन कहते हैं. मतलब कोई भी चीज़ को अपनाना, कोई भी चीज़ पे वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हम अपने अंदर क्या चेंजेस लेकर के आते हैं, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन. तो देखिए मैंने क्या लिखा है. एज अ अर्थ हैज डिफरेंट kind of places, there are ice cold regions, Greenland, desert and oceans. Not all organisms can survive all such weather conditions. So for example, my dear students, if you will see elephants, we don't find in places where it's with extreme cold. They are either found in a very moderate climatic conditions, or even if the weather conditions are hot. Therefore, to survive, the organism adapts or changes itself according to its surrounding. This is known as adaptation. And adaptation is a slow process and might take hundreds and thousands of years to take place. और अब हम जानेंगे कि adaptation क्यों ज़रूरी है. Why is adaptation important? तो क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़ सर्वाइवल के लिए. यस, अगर हम कोई भी जगह को नहीं अपनाएंगे, कोई भी जगह पे एडजस्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. और हमें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? फूड, वाटर, शेल्टर एंड मेट्स. सिंस माय डियर स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स होते हैं वो दे रिप्रोड्यूस, मीन्स वो अब उनके बेबीज बॉर्न होते हैं, तो इसीलिए उनको भी एक मेट चाहिए जिसके थ्रू वो रिप्रोड्यूस कर सकें एंड दे ग्रो देयर फैमिली. तो इसी सबसे पहला है सर्वाइवल. अडेप्टेशन हेल्प्स एनिमल
find food, water, shelter and mate. रिप्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि जो एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके बेबीज बॉर्न होते हैं, तो उसके लिए दे नीड अ पार्टनर. सो अडेप्टेशंस कैन इंक्रीज एन एनिमल्स चांस ऑफ फाइंडिंग अ मेट एंड सक्सेसफुली रिप्रोड्यूसिंग. प्रोटेक्शन क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो प्रीडेटर होते हैं, मतलब वो दूसरे एनिमल को मारते हैं फॉर देयर ओन सर्वाइवल. तो क्या होता है कि कुछ कुछ एनिमल्स जो रहते हैं ना वो कोमोफ्लेक करते हैं, मतलब जो सराउंडिंग का जो कलर रहता है उनका भी बॉडी का कलर जो रहता है वो सेम रहता है. जैसे पोलर बेयर है और जैसे कैमिलियन होता है, देर आर ऑल्सो कॉल्ड इंसेक्ट एंट. इस तरह के बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको ना आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे जब आप उस पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे जहाँ पे वो आपको एनिमल्स दिखेंगे करके. तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट कि वो एनिमल्स हैं वहाँ पे है या भी नहीं है, बिकॉज उन पे फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए. तो प्रोटेक्शन लाइक camouflage एंड शार्प क्लॉज. ठीक है, हेल्प्स एनिमल्स डिफेंड देमसेल्स फ्रॉम प्रीडेटर्स. तो ये क्या करते हैं, ये उनको हेल्प करते हैं ताकि जो उनके प्रीडेटर्स हैं, जो एनिमल दूसरे एनिमल को मार के अपना सर्वाइवल करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं. देन सर्वाइवल इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हर एक जगह पे अलग अलग वेदर कंडीशंस रहते थे. अडेप्टेशंस अलाउज एनिमल्स टू थ्राइव इन वेरियस हैबिटेट्स फ्रॉम डेजर्ट टू पोलर रीजन्स. तो वहाँ पे डेजर्ट हैं, पोलर रीजन्स हैं, ग्रीनलैंड, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एरियाज हैं करके जहाँ पे उनको एडजस्ट करना पड़े. तो अडेप्टेशन से क्या होता है, वो जो एनिमल्स होते हैं वो वहाँ पे उन क्लाइमेटिक, उन वेदर कंडीशंस में जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं. यस, तो ऐसे ही माय डियर स्टूडेंट्स, जो एक एनिमल्स होते हैं जब वो इस अडेप्टेशन को करते हैं तो इसके बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं. जैसे अडेप्टेशन टू हैबिटेट, मतलब जहाँ वो रहते हैं. फिर वैसे ही अडेप्टेशन फॉर फूड. अब हर जगह हर एनिमल को सेम तरह का फूड मिले ऐसा नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट्स. सो देयरफॉर वो जिस जगह पे वो रह रहे हैं उस जगह पे उनको कैसा खाना मिलता है, कैसा वो खाना खा रहे हैं, तो इसीलिए वो अपने आप को उसके लिए अडेप्ट करते हैं. अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, जैसे अभी हमने camouflage के बारे में डिस्कस किया, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स हैं जो अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. अडेप्टेशंस इन बिहेवियर. अडेप्टेशंस इन बिहेवियर मतलब जैसे सपोज कीजिए, जैसे देयर आर एनिमल, जैसे बेयर्स होते हैं माइंड, जब बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है तो ये हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं, मतलब ये पूरी सर्दी जो है ये सोते हैं. तो वैसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं जो डिफरेंट इस तरीके के अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर जो सीजन जो बहुत एक्सट्रीम है और वो उनको बेयर नहीं कर पाए, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं इज व्हाट वील गेट टू नो. तो जो ये अडेप्टेशन टू हैबिटेट है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या रहता है, इसमें दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5. जैसे एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फिबियंस, आर्बोरियल एनिमल्स एंड एरियल एनिमल्स. अडेप्टेशन टू हैबिटेट में 5 कैटेगरीज होते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मीन्स जो एनिमल्स हमें लैंड पे मिलते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो एनिमल्स हमें सिर्फ पानी में मिलते हैं. देन एम्फीबियंस मीन्स जो एनिमल हमें दोनों जगह मिलते हैं, वाटर एंड लैंड. एरियल मीन्स द एनिमल्स हु कैन फ्लाई. एंड व्हाट आर आर्बोरियल मीन्स वो एनिमल्स जो ट्री में जो लैंड में ही रहते हैं लेकिन ज़्यादातर ट्री में रहते हैं, उन्हें आर्बोरियल एनिमल्स कहेंगे. एंड about these my dear students we'll cover in our next topic. Since ये टॉपिक बहुत बड़ा रहेगा एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग रहेंगे my dear students. सो अगर अभी तक आपने अपने प्रीवियस किसी भी हमारे वीडियो का नोट्स नहीं बनाया है, ज़रूर बनाइएगा. आई जनरली कीप अ गैप ऑफ 2 to 3 days अगर मैंने अपने साइंस में कोई टॉपिक कंप्लीट किया था, सो दैट आप मेरे साथ साथ रहे हमेशा. और कुछ भी चीज़ अगर आपकी मिस हुई हो तो आप उतने टाइम पे उस चीज़ को कंप्लीट कर सकें. वीडियो को लाइक करें, ज़रूर से शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ. और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें माय डियर स्टूडेंट्स. मैं हर एक वीडियो जो बनाती हूँ बहुत दिल से बनाती हूँ, बहुत मन से बनाती हूँ, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन द बेस्ट
पॉसिबल वे, ताकि ये आपको साइंस सब्जेक्ट जो हम सीखने की जर्नी शुरू की हैं वो आपकी बहुत अच्छी रहे और आपको ये सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आए, ये आपके द प्राइमरी सेशंस में आपको बहुत हेल्प करें. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव आल्सो स्टार्टेड सिमिलर सीरीज ऑफ ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर भी मैंने शुरू किया. अगर आपने देखा होगा मेरे चैनल पे तो ग्रेजुअली मैं ग्रामर की भी सीरीज आई विल स्टार्ट अपलोडिंग. उनको भी ज़रूर देखिएगा, वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. बिकॉज इन इंग्लिश इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर इन ग्रामर देन इट्स वेरी इजी टू कैरी ऑन दैट. बिकॉज वो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा लैंग्वेज है जो हमें थ्रू आउट द लाइफ बहुत काम आएगा. तो अगर हम अपने ग्रामर में ग्रामेटिकली अगर हम कभी भी करेक्ट हैं तो हम अपने आंसर्स को अपने वर्ड्स पे भी लिखेंगे तो विल गेट फुल मार्क्स ऑन इट. यस, स्टे ट्यून्ड फॉर more such amazing lessons on this topic, adaptation in plants. तब तक के लिए आप सबको मेरा जय श्री श्याम.